अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पाकिस्तान बनने से पहले लोकल गवर्नमेंट की क्या हालत रही है, ये किन फैक्टर्स के इर्द गिर्द इवॉल्व हुई है। ब्रिटिश ने लोकल गवर्नमेंट किन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के इंट्रोड्यूस करवाई। इन चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान बन गया है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि 1947 से लेके 1969 तक लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती रही है। 1947 तक पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म के अंदर थी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल एक पंचायत सिस्टम था, विलेज हेडमैन सिस्टम था, या फिर नॉमिनेशन के थ्रू जो एरिया के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो नॉमिनेट कर देते थे किसी बंदे को, और वो नोबिलिटी में से होते थे, जिन लोगों के साथ कोई नाम जुड़ा होता था, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी, जो मशहूर लोग होते थे। तो इसमें कोई भी इलेक्टेड जो है सिस्टम नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू नहीं आती थी, सिर्फ नॉमिनेशन के थ्रू आती थी या फिर फैमिली सिस्टम के थ्रू आती थी। और क्योंकि 1947 से पहले सारे का सारा फोकस शिफ्ट हो गया था आज़ादी की तरफ और इस स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब फेडरल गवर्नमेंट बिल्ड करने की तरफ, इस वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो चीज़ बिल्कुल इग्नोर रही उस टाइम तक। तो no attempts were made on the process of decentralization. Bureaucracy completely controlled the local body system via system of nomination. In 1950 there was a widespread political instability. आप लोगों को पता होगा कि जो इनिशियल ईयर्स थे पाकिस्तान के, इंतहाई वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिस्टम था, हमारा एजुकेशन थी पॉलिटिकल। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके इर्द गिर्द हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को चला पाते या गवर्नमेंट के सिस्टम को चला पाते। तो देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल एजिटेशन। आपने शायद बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा कि नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी तेज़ी से अपनी धोतियाँ तब्दील नहीं करता जितनी तेज़ी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं। तो बहुत ही थोड़े से अरसे में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए। 1955 के अंदर 1955 में जो है ना वन यूनिट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब वन यूनिट क्या था? बेसिकली वन यूनिट मोहम्मद अली बोगरा जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में, उन्होंने जो है ना प्रपोज किया था। बेसिकली ये प्रपोज हुआ था नवंबर 1954 के अंदर, लेकिन जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 1955 में हुई थी। तो सिस्टम क्या था वन यूनिट सिस्टम ये था कि ये हमारे जो यहाँ पे 4 प्रोविंसेस थे, पंजाब, सिंध, उस ज़माने में केपीके को सरहद कहते थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद, इन चारों को मिला के एक यूनिट बना दिया जाए और इनको एक ही तरीके से गवर्न किया जाए, एक ही सूबा कंसीडर किया जाए। और उस टाइम क्योंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पूरा बांग्लादेश को मिला के एक सूबा बना दिया जाए। और उन्होंने उनको नाम दिया कि जो 4 सूबे मर्ज करके हमने पाकिस्तान के सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और पंजाब, इन 4 सूबों को जो मर्ज किया उसका नाम इन्होंने रख दिया वेस्ट पाकिस्तान। और जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। और इसका पीछे मकसद ये था कि सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा और गवर्न करने में आसानी होगी। तो दैट इज़ व्हाट वाज वन यूनिट जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1955 के अंदर। सो द ऑल क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, इसलिए सारे का सारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की तरफ, बजाय इसके कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ कोई भी तवज्जो दी जाती। 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। और तकरीबन 3 हफ्ते बाद 27 अक्टूबर 1950 सॉरी तकरीबन 3 हफ्ते बाद 1950 1958 के अंदर अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया, खुद टेक ओवर कर लिया। तो मार्शल लॉ लगने के पूरे 1 साल बाद 27 अक्टूबर 1959 को उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली ये 4 टियर का सिस्टम था, मतलब कि इसके अंदर 4 लेयर्स थी और सबसे नीचे वाली लेयर सबसे वीकेस्ट एंड देन स्ट्रॉन्गेस्ट उसके ऊपर, और देन उसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके लिए मैंने एक पिक्चर जो है
वो बनाई है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो बेसिकली 4 टियर्स थे। ये सबसे नीचे वाला टियर था उसका नाम था यूनियन काउंसिल। तो यूनियन काउंसिल वाज द लोवेस्ट टियर और सबसे ज़्यादा जो है जो रिप्रेजेंटेटर्स होते थे वो यूनियन काउंसिल से होते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारों की डिफरेंट थी। उसके बाद तहसील काउंसिल, इट वाज यू नो stronger than union council. They had different responsibilities than district council and then divisional council. We are going to look into their responsibilities in detail. तो ये जो हैं बेसिकली 4 टियर्स थे। सबसे नीचे वाला टियर यूनियन काउंसिल, फिर तहसील काउंसिल, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और फिर डिविजनल काउंसिल। तो द लोएस्ट टियर वाज यूनियन काउंसिल और यूनियन काउंसिल जो है इट कंसिस्टेड ऑफ 5 to 8 villages and a population of 8,000 to 15,000 people। मतलब कि 5 से 8 गाँवों के अंदर एक यूनियन काउंसिल बनती थी और 8,000 से 15,000 लोग होते थे उसके अंदर। और एक यूनियन काउंसिल के अंदर 10 से 15 वार्ड्स होते थे और हर वार्ड में से एक काउंसलर जो है ना इलेक्ट होता था। काउंसलर जो है बेसिकली ही वाज द बेसिक यू नो पर्सन दैट वाज इलेक्टेड इन अ यूनियन काउंसिल। तो वोटिंग सिस्टम वही था। वोटिंग सिस्टम वाज यूनिवर्सल adult franchise wherein a person of 21 year was eligible for the vote casting। जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उसको 18 ईयर के ऊपर ये जो है मुशर्रफ के दौर में हुई है। उससे पहले 21 ईयर का जो बंदा होता था उसे वोट कास्ट करने की इजाज़त होती थी। So union councils had economic, judicial, agriculture and industrial functions। उनके ये वाले जो हैं these were the four responsibilities that were given to the union council। So the judicial function took place under the Conciliation Code Ordinance 1961 with arbitration power in divorce proceeding under the Muslim Family Law Ordinance 1961। So basically they had few powers invested in them, you know, which was connected with the family court, and they had some other function as well। They it was involved, the union council was involved in the communication development and food production development। But the most important function of union council was that it was converted into the electoral college for the election of president। इसका मतलब ये है कि यूनियन काउंसिल के अंदर बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स के नाम से इन्होंने यूनियन काउंसिल्स के काउंसलर्स इलेक्ट कर लिए। और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उन्हीं काउंसलर्स ने वोटिंग की। उन 80,000 बेसिक डेमोक्रेट उनका उन्हें बेसिक डेमोक्रेट्स कहा जाता था। उन 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने या काउंसलर्स जिन्हें कह सकते हैं उन्होंने वोटिंग की और उन वोटिंग की बेस के ऊपर अयूब खान वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सो दैट वाज द मोस्ट important function of the union council, that they were converted into an electoral college इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसके अलावा उनके पास ये भी पावर थी कि वो लोकल टैक्सेस इम्पोज कर सकते थे। यूनियन काउंसिल के बाद हम देखते हैं कि तहसील काउंसिल जो है इनका क्या काम था। इट वाज हायर इन द ऑर्डर, जैसे कि हमने इस पिक्चर के अंदर देख लिया है कि इट वाज हायर देन द यूनियन काउंसिल। Members that were elected in the Tehsil Council were not democratically elected, not directly elected। यहाँ पे दो किस्म के मेंबर्स होते थे तहसील काउंसिल में, एक को हम ऑफिशियल कहते थे और एक को नॉन ऑफिशियल। तो जो नॉन ऑफिशियल थे दे वर द मेंबर्स दे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल विद इन देयर तहसील। जो अपनी यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बनते थे वो तहसील काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर बनते थे और द ऑफिशियल मेंबर्स वर हेड ऑफ द नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स विद इन द तहसील। तहसील के अंदर जितने भी नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स थे उनके जो है हेड्स थे वो बेसिकली तहसील काउंसिल के अंदर दे वर नॉन ऑफिशियल मेंबर बट दे वर नॉन इलेक्टेड बिकॉज दे वर द हेड्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स। And the number of official and non-official members were equal।
The तहसील council was headed by the assistant commissioner of the area. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि even तहसील council was being controlled by the assistant commissioner. हम जब अगले लेक्चर्स में जाएंगे और देखेंगे कि दूसरी लोकल गवर्नमेंट्स किस तरह काम करती रही हैं तो हमें पता है वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट between this local government ordinance of Ayyub Khan and the other ordinances. So just keep it in mind that Tehsil Council was headed by the assistant commissioner of the area, which means that the bureaucracy was still superior than the local government and the elected representatives, even in the first first local government ordinance. Apart from this, local government जो तहसील council थी, it acted as a coordinating body between union and district council. Union council was the lowest tier, district council was higher than तहसील council. तो तहसील council acted as a coordinating body. तहसील council के बाद जो अगला tier है वो district council है. So the district council was the most important tier of the local government of that time. The head of the district council was the DC of the area, मतलब कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द एरिया. अब आप देख रहे होंगे कि तहसील काउंसिल का जो हेड है वो असिस्टेंट कमिश्नर था और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हेड है वो डेप्यूटी कमिश्नर है. सो वी कैन सी दैट द ब्यूरोक्रेसी वाज कंट्रोलिंग द लोकल गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम. So the chairman of the district council was selected from the chairman of Tehsil and Union Council. The council consisted of official and non-official members, and their numbers and their number was equal. It performed vast financial and executive powers. It was charged with the development functions and responsibilities, and it had the power to impose any taxes. It means that the Union Council was responsible for development function. They were responsible for recommending the development that was needed in that area. But the main body that was going to control the development function and the finances was the district council. तो अभी हम देख लेते हैं कि जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनके क्या functions थे. So they had two kinds of function, one compulsory and optional. You know the difference between compulsory and option functions. Compulsory functions are the functions that were indispensable. The deputy commissioner had to perform those functions, and the optional functions are the functions which are optional. They are not a compulsion. They are not indispensable, but they can be done if the deputy commissioner have the luxury of time and the budget. So the compulsory function of DC were the provision and the maintenance of the schools, library, hospital, public roads, and playgrounds. The optional functions were the provision of the secondary and the higher education, the culture, social, and economic welfare. The divisional council was the highest tier. The head of the divisional council was a divisional commissioner. The members were vice chairman of the district within the division, deputy commissioner, divisional level officers, official members. The number of official and non-official members were equal even in the divisional council. We can see that similar to the British period, the system was under the bureaucratic control through the controlling authority. हम देख सकते हैं कि सारी की सारी जितने भी tiers हैं they were basically being controlled by the bureaucracy, and all the power was vested in assistant commissioner, deputy commissioner, and divisional commissioners. So the bureaucracy was the one which was controlling the whole system. The controlling authority had the power to quash the proceeding, suspend resolutions passed or order made by any local body, prohibit the doing of anything proposed to be done, and to require the local body to take some action. So they had all these powers. They could do anything without any, fear, with impunity. They had no authority upon them that was controlling them. Basically, the controlling authority, which was the bureaucracy, was in fact running the local government of that period of time. Now we are going to talk about some points to ponder. Uh,
We know that the democracy is the control of common people over the government. This is the basic idea of the democracy is that the common people are the ones who are running the government, and it is ensured by the system of election. The the question that I'm posing here is that if the BD system, which is basic democratic system of Ayub Khan, was actually true democracy, we know that it was not. We have just uh, read everything that the bureaucracy was controlling everything. So it was a controlled democracy, and even Ayub Khan himself said that country is not ready for the democracy. He even said that democracy is a luxury that Pakistan cannot afford. So it means that he was actually willing to give only controlled democracy to the people of Pakistan. But the next question that arises is, was that controlled democracy was suitable for the people of Pakistan of that time? So this is a question that I want you guys to ask yourself and do a little bit research and come up with your own opinion. There are no right or wrong answers. It's just a point of discussion. We will discuss it in the class group, inshallah. And there are some other questions as well. You can go through these questions on your own and come up with your own opinion. You can do the research on your own, or you can ask the right questions. So you can go through these things on your own. In the end, I would like to say that in this system of local government, which was introduced by Ayub Khan, there was so many opportunities for the corruption, and the system was further discredited by the popular perception of the massive irregularities in 1956 presidential election, which pitted Ayub Khan against Jinnah's sister Fatma Jinnah. You guys know that in these elections, Ayub Khan contested election against Fatma Jinnah, and Fatma Jinnah lost the election. That is another debate, but these were the things that discredited the whole system. So, with this, we have covered pretty much everything that was given in the basic democratic ordinance of Ayub Khan, which created the local government of that time. We will, inshallah, further study the upcoming local government in the history of Pakistan in the next classes, inshallah. See you then. Allah Hafiz.